still standing ruin of a small farming village. The entire village is surrounded by natural beauty, and the small houses and quarters are what were once barns and stables and living quarters of Muslim farmers who would grow olives, almonds and cherries. Even now, many cherries bought in the UK are from this region. Accompanying him as a guide was a historian of early Muslims in Spain, Professor Ignacio Girones Guillem. Professor Ignacio Girones accompanied Hazur on a brief tour of the ruins. It was the typical place where the Muslim farmer used to have his house, like. Está todo eso de ahí. Dile también que lo terminamos de reconocer ahora. Es decir, esto está olvidado hasta 1950. All this place was forgotten until 1950. कहता है कि यहाँ पे बिल्कुल अबंडन किया गया था और किसी को एहसास नहीं हुआ कि ये क्या है या ये क्या चीज़ है. Only until 1950 they started recognizing that it was the Muslim place where they used to live. De que no avance la construcción. कहता है कि कम से कम कि इसकी वो degradation ना continue. इसको किस तरह प्रिजर्व रख सकते हैं कि एक पत्थर गिरता जाएगा सिवाय इसके कि यहाँ कोई किनारे बनाए जाएं ताकि उनमें से पत्थर न गिरे. Eso se puede hacer un proselitismo y hacerlo afectivo. Eso es gratis. Aprender a quererlo. कहता है कि मेरा तो यही काम है कि लोगों की इसकी मोहब्बत का वो पैगाम दूँ इन जगहों का ताकि वो फिर एक किस्म का वो पावर बने. इसको भी यहाँ डॉट बन जाए तो प्रिजर्व हो जाए तो दीवार का वेट उसको बर्दाश्त कर ले इसको भी डॉट बन जाए. Necesitaría aquí reforzamiento de estructura para que no se cayera. यहाँ के चौक की मिट्टी है ना तो मिट्टी भी प्लस बीच में डाला हुआ है वो भी सीमेंट की तरह बनी हुई है. Esto actúa como si fuera cemento, ¿no? Esto sale. Salen todas las revistas y todo. By the end of the tour, even the professor was impressed with Hazrat Khalifatul Masih and could not help but say that Spain should know that Muslims have returned. कहता है कि बताएं कि आप लोग वापस आ गए यहाँ पे. इस वक्त वो हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान वापस आ गए. पहला कदम आ गया है. Dice que el primer paso ya está dado. Hazur even instructed members of the entourage to give adhan, where more than 400 years ago, Muslims had once called out the name of Allah to the hills and mountains. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salat. Hayya ala
الصلاة حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Hazur also instructed Munir Odeh, the head of MTA Productions and a Palestinian by origin, to give azan, stating that it was Arabs who had been forced out of these lands, so it is rather more fitting that an Ahmadi Muslim Arab should call the azan. अरबों को यहाँ से निकाला था, वहाँ से जाके अज़ान देने उस चौकी पे खड़े होते थे। अरबों को अज़ान की वजह तो अरबों की हुई। أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Once more, the air and the valley was filled with the name of Allah and His Messenger.